Next very important features of Indian Constitution is single citizenship. Well, this is very simple point and very short point. In India, all citizens, irrespective of the state in which they are born or resides, enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country, and no discrimination is made between them. Now this is again very simple point to understand, but still we need to discuss this point more in detail, that in India our constitution have adopted single citizenship concept. What does it mean? It means that anybody, all the citizens, irrespective of which class you belongs to, which caste you belongs to, which religion you belongs to, or even which part of the India you may reside in, all the citizens will have the same citizenship, irrespective of your place of birth or resident, or you reside in any part of the territory. You will enjoy the same political, civil rights as a citizen of this country, and therefore there cannot be a discrimination as far as a citizenship is concerned. The very important point which we need to understand, that you may be from any part of the country, you are a citizen of India, you will enjoy a single citizenship. There is no concept of a dual citizenship in India. Example, you become a citizen of a particular state where you are, as well as you are a citizen of a country. No, we don't have that system. In America they have that system called dual citizenship, but in India we have a single citizenship. ये जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें यही लिखा है कि आप कहीं पर भी रहते हो, आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, आप कौन से भी रिलीजन को बिलोंग करते हो या क्लास को बिलोंग करते हो या कास्ट, एथनिसिटी, या फिर आप किसी भी स्टेट में क्यों ना रहते हो, आपकी जो सिटीजनशिप रहेगी, आपकी जो नागरिकता रहेगी वो एक रहेगी। आप हिंदुस्तानी हो, आप एक इंडियन हो, इसके अलावा और इसके नीचे कुछ नहीं है। सो ये जो फ्रीडम है, ये जो अधिकार है, ये आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ये सबको अधिकार दिया गया है कि आप कौन सी भी स्टेट में हो, आपका जन्म कहीं पर भी क्यों ना हुआ हो भारत में, आप एक भारतवासी है और आप सदैव सदा एक ही पॉलिटिकल और सिविल राइट एंजॉय करोगे। जो पॉलिटिकल राइट्स एक इंसान को नॉर्थ इंडिया में मिलता है वही उसको साउथ इंडिया में भी मिलेगा। जो उसको सिविल राइट्स एक स्टेट्स में मिलता है वही सिविल राइट्स उसको बाकी स्टेट में ही मिलेगा। भले आप नॉर्थ से हो, साउथ से हो, ईस्ट वेस्ट, या फिर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से हो, या फिर लक्षद्वीप आइलैंड से क्यों ना हो, आपकी जो सिटीजनशिप है वो एक है, एंड दैट इज़ इंडियन। आप एक भारतवासी हो, आप एक हिंदुस्तानी हो, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ द ब्यूटी of a salient feature of our Indian Constitution.